Hey guys, welcome back to my channel. So I hope that you have watched my previous videos of GST and history also. So if you have not still subscribed to my channel, please do so, and please like the video if you like the content. So the topic which we are going to discuss is a very simple topic. That's the topic of name is the equation on a straight line. It's a mathematics topic, as you all know. So first thing, equation. This equation, first thing that you need to know, that equation is always in the form of x and y. For example, you write x plus y is equal to 10 or x plus y minus 10 equal to 0, one and the same thing. So this equation you need to get, it is always in the form of the x and y. And for example, you take this graph, any line you draw, this, see this one also, this line, any line you draw, that it always has an equation. But how to form this equation, I'll be telling you in the next point. So this is every line has certain equation. So this is the, as I told you that equation is always in the form of x and y. The general equation of a straight line is y is equal to mx plus c. ये एक general equation है, okay, where y is the y coordinate, c y coordinate, m is the slope, which I'll be telling you further what is the slope, x is the x intercept, x coordinate, and c is the y intercept. Mind it, y intercept, y. Now let us see that what is this intercept, what is this x intercept, what is the y intercept. ये तो I'll be telling you in the next point. After telling you intercept, I'll be telling you what is a slope. Y coordinates and x coordinates, all of you know only. Like if I write a point here, this is the x coordinate and this one is the y coordinate. Okay, and when we'll solve the question, it will be even more clear to you. So if I draw this graph here, okay, and I draw a line here, okay, so here this is intersecting on the x-axis, so it will be, y is gonna be 0 here. तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो y होगा वो 0 होगा. So supposingly it intersects at 2, 0. तो ये जितनी लेंथ पे आकर ये इसे इंटरसेक्ट करती है ना, उसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 2. फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इंटरसेक्ट्स, हेयर द एक्स इंटरसेप्ट इज गोना बी, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. सपोजिंगली इट्स 0, 4. सो वाई इंटरसेप्ट विल बी, जितना यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 4. तो वाई इंटरसेप्ट विल बी 4. सो दिस इज वॉट वी कॉल इट एज अ सी. सी इज अ वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कोऑर्डिनेट on the y-axis, lying on the y-axis. This is a general equation of a straight line. This is a y-coordinate, this is the slope, this is the x-coordinate, and this is the y-intercept. And this is the way you can find the equation in the x and y. And when you need to find the equation, I told you that it is always in the form of the x and y. So whenever you write like this, y is equal to mx plus c, isn't it? तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक स्लोप चाहिए और आपको एक y इंटरसेप्ट चाहिए. x और y की तो फॉर्म में निकालना है. सो मतलब x और y की कोई झंझट ही नहीं है. x और y की वैल्यूज वी नीड नॉट टू पुट ओनली, बिकॉज x एंड y की फॉर्म में तो हम इक्वेशन चाहिए. तो वी नीड, व्हाट वी नीड इज अ स्लोप. स्लोप कैसे फाइंड आउट करनी है, आई विल बी टेलिंग यू नाउ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. एंड एक हमें चाहिए y इंटरसेप्ट. और y इंटरसेप्ट मैंने बता दिया, जैसे कि हम यहाँ पे देख लो. अब यहाँ पे ये जो लाइन है, इट इज़ इंटरसेक्टिंग हेयर ऑन द y एक्सिस. सो x कोऑर्डिनेट इज 0 हेयर, सो इट इज़ 0, 2. सो 0 ओरिजिन से लेकर y इंटरसेप्ट तक इसकी कितनी लेंथ है, 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स, ठीक है. तो ये y इंटरसेप्ट कितना होगा, 2, और x, सॉरी थोड़ी सी लाइन डेविएटेड है बट इट्स कंसिडर इट ऑन द 1, और x इंटरसेप्ट होगा 1. ओके, इधर बस इधर -1 होगा x इंटरसेप्ट, और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 2 ही होगा. ठीक है, तो y और x का तो झंझट ही नहीं है, बिकॉज दैट इक्वेशन इज टू बी इन दैट फॉर्म ओनली. But you need to know what is this m, that is the slope, and what is this c, that is the y intercept. You know what's the c, that is y intercept.
क्या होता है ग्राफ के ऊपर, बट यू डोंट नो व्हाट इज दिस m. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस m. ओके, so see the slope. So how to find out the slope? For example, if you draw this graph and you take this slope, this is x1, this is y1, this is x2, y2. There is no problem if you consider this as x1 or this is x2 or this is x1 and this is x2. उसमें कोई problem नहीं आती है. But the formula क्या है? y2 minus y1, x2 minus x1. ठीक है. See, this is example. If you take this a coordinate as 1, 0 and b coordinate as 0, 2 and you want to find out the slope, then what you can do is like one is the thing कि आप इसे y2 मान रहे हो तो उसके साथ ऐसा होगा कि 2 minus y2, this is 2 y1 माइनस करना था माइनस, ठीक है. ये even if you consider this as y2 and this as y1 or this as y1 or this as y2, it will remain the same. Answer will remain the same. See, I've solved it here. If I considering this as 2, there was a bit mistake. I've written here 1, but it should be 0. 2 minus 0, okay, it will be 2, and 0 minus 1 will be minus 1, so answer will be minus 2. And if you consider this as y2 and this as y1, then it will be like 0 minus 2 and y minus 0. Answer will be still minus 2. So you can take anything as y2, anything as y1, but this is the formula which you need to apply. Okay, so this is, now let us see intersection of the lines. For example, I draw these two lines intersecting at a point x, which are having the point x and y. तो ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली सॉल्व दीज टू इक्वेशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे करके कोई भी मेथड लगा के यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट. नाउ लेट अस समराइज वॉट एवर वी हैव रेड. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी रेड वॉज लाइक ये जो इक्वेशन होती है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द एक्स एंड वाई. ठीक है, and the general equation is y equal to mx plus c, where this c is the y intercept, m is the slope. इसके तो फॉर्म में निकालना तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. और स्लोप इज़ y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जिसको मर्जी y1 y2 मान लो, वो आंसर आपका मैच कर जाता है एज आई टोल्ड यू. सो उसके बाद हमने बताया कि व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट, तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, सो देयर इज अ वन पॉइंट विच विल सेटिस्फाई बोथ द लाइन्स x, y. तो उस केस में यू कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन लाइक दिस. So you can solve these both the equation and you will actually get these coordinate of x and y. So this is all about the equation on a straight line. In the next video, I'll be doing the question solving. Thank you so much for staying till end. Bye-bye.